Hello students. In the last class, we completed your chapter number 3. Now we'll start with your chapter number 4, that is supply. Now the supply chapter, it is 80 to 85% same as your chapter of demand. So it is very important for you to understand the concept of demand first, then you just come to this chapter. As and when we'll complete this chapter, I would take one test with the help of Google form. You have already used the Google form for giving your computer examination, so you are well aware of the process. MCQs as well as 1 markers will be asked in that examination, so I want all of you to prepare for that. We'll from the beginning, for beginning part, we will just take your chapter number 4. Okay, so let us start with your chapter number 4 now. Hello students. So in the last class we discussed or completed your chapter number 3. Now today we are going to start with your chapter number 4. In the chapter number 4, this something you would say like a twin brother of you can say supply. But before we understand the concept of supply, I want all of you to understand the concept of demand. So if you have any difficulty before you can say in the concept of demand, first go back to all the lectures which I have you can say recorded and kept it on YouTube, and then show it to me, you can say then come back to this chapter, because without understanding the concept of demand, it will be difficult for you to understand the concept of supply. Okay, so let us start with the concept of supply now. Supply का मतलब क्या होता है? Before we understand the concept of supply, as I told you कि supply is a twin brother of demand. So what is demand? Demand is when a person is ready to buy at a given price and at a given place and in a given quantity, that is known as supply. That is known as demand. So that is customer oriented. Demand is something which is customer oriented. Yes or no? Now you can say we will move further to supply. So supply is when same thing, but it is related to producer. When a producer is ready to you can say sell at a given price, place, quantity, etc., it is known as supply. So when we understand the concept of supply, यहाँ पर 2 या 3 words it comes under our you can say definition. One, when a producer is ready to sell what? Even he is ready to sell his product, ठीक है, and the product which he has to produce. So what is produce, or you can say by the producer, the process of producing a product is known as production. ठीक है, how do we do the production? Production का process क्या है? We make use of land, labor, capital and entrepreneurship. ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करके व्हेन वी यूज़ 5 M's, दैट इज़ योर मैन मनी मशीन मटेरियल मेथोडोलॉजी. जो 5 M's को जब हम यूज़ करते हैं एंड व्हेन वी डू द प्रोडक्शन, यू कैन से क्रिएट यू कैन से फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल. जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें से जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज योर you can say production. Raw materials को finish goods में convert करना is known as your production. Okay, let us move further. Okay, now we'll move on to your sorry beta, it went back. Oh, pause करना. Sorry students, there was a interruption as such. So production का मतलब हमने देख लिया. Then we will move on to the you can say supply. तो supply मैंने आपको बता ही दिया. When a producer is ready to sell at a given price and at a given you can say time, that is known as your supply. Yes or no? Then we have, what is the problem?
Okay, so we have already seen the supply part. Now we'll move on to the stock. What is stock? Stock is something which we have produced. Stock क्या है जो हमने already produce किया हुआ है. We have produced but we have not you can say sold in present. अभी present में उसको sell नहीं किया है but we intend to sell it in future. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We will keep it in your warehouse. वो फिर हम कहाँ रखेंगे? We will keep it in your warehouse. Warehouse क्या होता है? You have studied in your OCM. आपने OCM में पढ़ा होगा. What is warehouse? Yes or no? Warehouse का दूसरा नाम क्या होता है? Godown. ठीक है? तो we will stock the goods in your godown or your warehouse to be sold in future, which is produced in present but it may be sold in future. Fine. Okay, let us move further. Next thing which is very important, पहले तो था प्रोडक्शन होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन और ऑफ स्टॉक. सप्लाई किसका होगा? या तो प्रोडक्ट का होगा या फिर स्टॉक का होगा. ठीक है. सो दिस आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर यू कैन से product to be supplied. Now you can say there are certain things which is very important. मैंने जैसे बोला था कि willingness to sell, मैंने आपको जब अभी डिफाइन किया था, सप्लाई का मतलब क्या होता है? when a you can say producer is ready to sell at a given price at a or willing to sell. अगर उसको नहीं सेल करना है तो you cannot sell. जैसे डिमांडर है, if he is not ready to purchase he or he is not willing to purchase, उसको उस चीज़ को परचेज ऐसा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है. मे बी आई हैव मनी टू परचेज अ कार, मेरे पास कार परचेज करने के पैसे हैं बट मेरी इच्छा नहीं है. आई डोंट वॉन्ट अ कार. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विलिंगनेस टू परचेज द कार. सेकेंड, एबिलिटी टू परचेज अ कार. अब मेरे पास विलिंगनेस है, मतलब मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे कार चाहिए बट आई डोंट हैव अ एबिलिटी टू परचेज कार. मुझे वो कार परचेज करने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मतलब मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं टू परचेज अ कार. हाउ आई वुड परचेज? सेम वे अगर प्रोड्यूस सेलर की बात करें तो सेलर इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग एबिलिटी टू सेल मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सैनिटाइज़र. ठीक है. सैनिटाइज़र की जैसे ही कोरोना आया था तो सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. व्हेन इट जस्ट स्टार्टेड, और जब लॉकडाउन हुआ था, इवन आई वेंट टू नंबर ऑफ शॉप्स और देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ सैनिटाइज़र. जब एकदम से ज़रूरत पड़ी थी इनिशियल स्टेज पे तो प्रोड्यूसर्स के पास में बहुत डिमांड थी. हर रोज़ जाके मैं पूछती थी कि भाई डेटॉल का वो जो स्प्रे सैनिटाइज़र आ गया, बट द पर्सन वुड से कि भाई नहीं, सैनिटाइज़र अभी आउट ऑफ स्टॉक है. सो सेल्समैन वांटेड टू सेल, ही उसको सेल करना है सैनिटाइज़र बट देयर वाज नो प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. स्टॉक ही नहीं है या फिर प्रोडक्शन नहीं है तो इट कैन नॉट, ही इज़ नॉट एबल टू सेल. Yes or no? So that is very important. The person should be willing to sell and he should have ability to sell. ठीक है. These 2 points are very important. Next is your ये थोड़ा repetition हुआ है if I'm not wrong. Let me check in the textbook. हाँ, ability to sell मतलब आप you have capacity to sell and willingness to sell मतलब आप चाहते हो to sell in the market. And third, yes, it is a repetition. Okay, so this is the different this is the concept. These are the 2 things: willingness to sell as well as ability to sell are most important part to determine the supply in the market. Okay, let us move further. Stock and supply. Stock क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अभी बता दिया था कि स्टॉक का मतलब क्या होता है. स्टॉक इज समथिंग विच वी प्रोड्यूस टुडे but we are not ready to sell today but we will sell it in tomorrow. ठीक है. So stock is nothing but I would say stock is nothing but it is future supply. stock क्या है? future supply. ठीक है. it will become supply but not present, but in future it will become supply. Yes or no? So
they are simultaneously, you can say stock and supply are used simultaneously by the people. Normally हम लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक नहीं है, मैडम सप्लाई नहीं है, मैडम स्टॉक नहीं है, बट they use supply and you can say stock as a similar words, but they are totally different. Stock मैंने जो बोला ना, that is something you are willing to sell but not in present but in future. Why not in present but in future? Because the prices which you are getting are quite low. आपको अभी उसमें उसको benefit नहीं मिल रहा है, ठीक है. और मे बी सम प्रोडक्ट्स इफ दे एज्ड प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल राइस को अगर आप एज करो, मतलब 1 साल 2 साल पुराना राइस बेचो, तो उसकी प्राइस आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है. सो स्टॉक इज टोटल अमाउंट विच यू विल सेल इन फ्यूचर. सप्लाई इज समथिंग विच यू विल सेल इन, यू आर रेडी टू सेल, ठीक है. नाउ स्टॉक supply can never be, always remember that supply is always less than or equal to stock. जो सप्लाई होती है वो या तो स्टॉक के जितनी होगी. सपोज आई हैव मेड 1000 यूनिट्स, मैंने 1000 यूनिट्स बनाई है, ठीक है. ईदर आई विल सेल 100, ईदर आई विल सेल 200, आई कैन सेल टिल 1000. सो जो मेरा स्टॉक है 1000 का, मैं उतना पूरा का पूरा उसमें सेल कर सकती हूँ. सो योर सप्लाई विल ईदर बी लेस और इक्वल टू, यू कैन से, जो आपकी स्टॉक है, इट इज़ ऑलवेज, यू कैन से, एंड सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई देखें तो सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्टॉक, ठीक है. सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन or equal to stock. Okay, it cannot be more than stock, cannot, you can say supply cannot be more than stock. Supply कभी भी stock से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है. That is a quite a relationship between stock and supply. Now factors are affecting or the determinants of supply, if you would see, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो दिस आर दोज पॉइंट्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर चैप्टर ऑफ डिमांड, बट वी स्टडीड ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम डिमांड व्यू पॉइंट. नाउ विल स्टडी ऑल द सेम पॉइंट्स विद, you can say, supplies viewpoint. Yes or no? So let us study one by one. First factor is your factors or factors that affect the supply is price of the product. Price of the product में क्या है आपका? When price increases, supply increases. When price decreases, supply decreases. जब price increase होती है तब supply increase होता है, price decrease होती है तो supply decrease होता है. Why? Because when price increases, जब price increase होती है तब supplier को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो supplier's profit increases. जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लायर का प्रॉफिट कम हो जाता है. यस और नो? सो दैट इज व्हाई डिमांड एंड प्राइस, डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन था? नेगेटिव. डिमांड एंड प्राइस आर नेगेटिवली रिलेटेड, बट डिमांड प्राइस एंड यू कैन से सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड. प्राइस और सप्लाई क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड, सप्लाई, इज योर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. फाइन. कैसा रिलेशनशिप है प्राइस एंड सप्लाई में? वी हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप है? वी हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. फाइन. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड factors other than price. First is your price of factors of production. आपके factors of production कौन कौन से हैं? उपसी, ये बंद क्यों हो जाता है बार बार? Factors of production कौन कौन से हैं आपके? There are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. If the, you can say,
cost which we are spending on your four factors of production. मतलब what is the cost which we spend on the four factors of production? That is rent, wages, interest and profit. So when your rent, wages and interest and profit, if it is high, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा. अगेन एज वी डिस्कस दैट जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम. सो व्हेन लैंड लेबर कैन से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की जब कॉस्ट बढ़ती है, एट दैट टाइम द सप्लाई वुड बी लो. And when rent, wages, interest and profit, that is you can say I will rent, wages, interest and profit, when it is low, at that time supply will be high. ठीक है. And when your rent, wages, interest and profit, when it is you can say high, at that time supply will be you can say low, because they have vice versa relationship. When the cost increases, our profit reduces. Fine. Okay, let us move further. That is level of technology. Level of technology की हम बात करें तो level of technology again it helps to reduce the cost of production. For example, इंटरनेट. ठीक है. पहले जो थे हमको जो कॉल करने होते थे इंटरनेशनल कॉल, आईएसडी बोलते थे उसको. क्या बोलते थे? वी यूज टू कॉल देम आईएसडी कॉल. आईएसडी कॉल के रेट्स बहुत हाई थे. दे वर क्वाइट हाई, ह्यूज. अगर कोई कंपनी आईएसडी कॉल करे तो उनका बिल लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ में आता था. दे यूज टू गेट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर कॉलिंग. बट एज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज, इंटरनेट की वजह से नाउ वी हैव व्हाट्सएप. ठीक है. And we have number of calling app like Google, Duo, Meet, etc. With that we just need internet. हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के पैसे देने हैं. कॉलिंग इज क्या है? कॉलिंग इज फ्री. सो आज जो आईएसडी कॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा डिमोलिश हो गया है, आई वुड से, बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट. जो आज आप व्हाट्सअप सोच रहे हो या देख रहे हो ना, 90s के एरा में आप अपने मम्मी पापा को पूछना, इन द एरा ऑफ 90s, मतलब 91 से लेके 2000 तक जो कॉस्ट थी कॉलिंग की, उसके सामने आज वो कॉस्ट कम हो गई है. सो सेम वे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम हो जाती है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द सप्लाई increases. When you can say level of technology increases, आपका जो level of technology है, ये जो है level of technology, अगर वो बढ़ता है तो supply भी बढ़ता है. और अगर level of technology कम हो जाती है, कम तो नहीं होगी, but if there is no change in the level of technology, then supply would be low. At the end of the day, profit किससे मिलता है, that matters. ठीक है. एंड यू कैन सी द कंट्री विच आर मोर टेक्नो सेवी, जिस कंट्री जो ज़्यादा टेक्नो सेवी है, लाइक कंट्रीज लाइक अमेरिका, देयर GDP is high because their sales is high. Countries which is less advanced, less techno savvy, they are, you can say, having less sales. Okay. So technology have which kind of effect? It would have the favorable effect on overall supply of a country or a individual. ठीक है. Now next point would be your future expectation of the price. Future expectation of price में हम लोग देखते हैं कि if we expect that in future the prices are going to you can say factors of production, कि जो हम बात कर रहे हैं वॉट एवर रीजन से हमको पता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ ज्वेलर. ठीक है. अब मुझे पता है गोल्ड की प्राइस पता चल जाता है. आई एम नॉट जोकिंग, बट माई मॉम शी यूज टू हैव वन फैमिली ज्वेलर. तो आई रिमेंबर when my mom went to buy some jewelry, he told कि आप जल्दी खरीद लो, आफ्टर 10 days द प्राइस, और आफ्टर 15 days और एक महीने में प्राइस बढ़ जाएंगे. तो
So if you want to purchase now. And it so happened that my mom purchased because he was a family jeweler और वो चाहता था कि हम purchase करें, but it increased. तो अगर he was a family jeweler like a family, तो उसने explain बताया. Otherwise अगर जो आपका family jeweler नहीं है या फिर आप producers से you are not in touch with the producers or something like that, तो what he would do, आप जब परचेज करने जाओगे तो he would say कि अभी तो डिज़ाइन नहीं है, आप 10 दिन बाद आना, कम आफ्टर 10 days, अच्छी डिज़ाइन आएगी 10 days, and he will try to sell you in future. So when he is expecting that the price is going to increase after few days, he will stock. वो क्या करेगा, the producer or the seller will the producer or a seller will stock the product, है ना. He, and when he expect that the future price are going to reduce, then he would sell more. अभी बेच देगा जिससे उससे फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिले. सो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के बेस पे देयर वुड बी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द, यू कैन से, ओवरऑल सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है. अदर फैक्टर्स में हम देखें तो अदर फैक्टर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं. यू कैन सी दे आर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अभी क्या है, क्वाइट अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. ठीक है. सो ड्यू टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देयर वुड बी लेस सेल्स और सेल्स विल रिड्यूस इन द मार्केट बिकॉज प्रोडक्शन विल रिड्यूस. नेचुरल कंडीशंस, बहुत बारिश है तो हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट तक पहुंचा नहीं पाएंगे. सो एट दैट टाइम ऑल्सो द सप्लाई वुड रिड्यूस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय टोमेटो, seller wants to sell the tomato, but there is no you can say supply of some tomato due to heavy rainfall, so there would be no sales. ठीक है. लीगल सिस्टम में मतलब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ बैंड को, यू कैन से, गुटखा बैन कर दिया है. ठीक है. पॉलीथीन बैन करी है कि भाई यू शुड नॉट कंज्यूम गुटखा, महाराष्ट्र में बैन किया हुआ है. सो अगर लीगल सिस्टम उसके अगेंस्ट है तो देन ऑल्सो द सप्लाई विड बी लो. इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स, मतलब बार बार में आपकी कंपनी में अगर लॉकडाउन हो रहा है तो सप्लाई विल बी लो बिकॉज सब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा. सो ऑल दिस फैक्टर्स ऑल्सो हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. सो फॉर टुडे योर होमवर्क वुड बी, फॉर गॉड्स सेक, for today your homework would be explain the concept of supply with the help of factors affecting supply. This is your first question. Second, explain the difference between stock and supply. Fine. So I want all of you to complete your homework. If you have any difficulty, you may call me. Okay. So with this we complete our lecture for today. Stay home for few more months and stay safe for few more months. Then we'll have our regular school. Okay. So goodbye for now, students.